So we are going to discuss law of conservation of energy. First, you write down the statement for the law. You can write it down. This law states that energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. It can only be transformed from one form to another. So law of conservation of energy. This law states what? Energy can neither be created nor be destroyed. Energy can be converted from one form to another. Okay. So if I ask you, this is surface of the earth, and if there is a ball at certain height, which energy is there in the ball? Which type of energy? If the ball is kept at certain height, ball में कौन सा energy होगा? Nabaruna has given the answer, potential energy. Okay, good. If you raise a body against gravity to certain height, it acquires potential energy. Now, if I release this ball will acquire which energy? If I release this ball, the ball will acquire which energy? Kinetic energy. Suppose the potential energy here, it was 100 joule. And the ball is allowed to fall and it reaches somewhere mid position. Then it kept on falling down and reaches a lower position just before touching the ground, position A, position B, and position C. At position A, potential energy 100 joule. If I ask you what is the kinetic energy at position A? At position A, what is the kinetic energy if I ask you? At position A, what is the kinetic energy if I ask you? 0. Suppose at position B, potential energy decreases because height decreases, it becomes 60 joule. Can you say what will be the kinetic energy acquired? Can you say what will be the kinetic energy acquired? अगर पोटेंशियल एनर्जी बी में 60 जूल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? According to this law, energy can neither be created nor be destroyed. So at position A, if it was 100 joule potential energy, B में height कम होने से potential energy हो गया 60, तो kinetic energy कितना होगा? No idea? Anyone? Okay. Nabaruna has given the answer 60 joule. Any other student? Any other? Okay, the kinetic energy will be 40 because total कितना होना चाहिए? यहाँ total energy कितना? 100 joule. यहाँ भी total कितना होना पड़ेगा? 100 joule. At position C, suppose potential energy acquired. Suppose potential energy acquired is 0 because the height is 0. तो kinetic energy कितना होगा यहाँ पे? If I ask you, kinetic energy कितना होगा? It will be 100 joule. So when a body falls freely, you know the energy transformation.
potential energy gets converted into kinetic. Lekin according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. Have you understood the law? Have you understood the law? Yes or no? Just inform me in the chat box. Okay. Now, we are going to prove this law for a freely falling body. Mathematically इसको prove करेंगे हम लोग freely falling body के लिए. So, the heading is prove the law of conservation of energy. Law of conservation of energy for a freely falling body. For a freely falling body. Okay, if you want to see the previous screen, just take the screenshot. Just take the screenshot and raise your hand. Okay. आज का क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? आज का क्लास में अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, प्रूविंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, योर क्लास इज सक्सेसफुल टुडे. So for that, we are considering a body whose mass is m and it is allowed to fall from certain height. एक बॉडी जिसका मास m है, this body is allowed to fall from certain height. This body is allowed to fall from certain height. Let the height be h. Let the height be h. A body of mass m is allowed to fall from certain height. Let the height be h and g be the acceleration due to gravity. So अभी बॉडी का पोजीशन कौन सा है? पोजीशन A. While falling, suppose the body reaches another position, position B, and then it reaches another position, position C, just before touching the ground. Position A से position B and then position C just before touching the ground. While falling down, energy is converted. You know that. While falling down, how is energy converted? Potential energy gets converted into kinetic energy. So what I have considered that the body is allowed to fall from a height h. So between A to B, if I consider the distance to be x, A से B तक का distance अगर x मान लेगा हम, so B to C में कितना distance cover किया? What distance is covered between B and C? What distance is covered between B and C? Anyone? No. Total distance is h. और A और B के बीच में अगर distance covered is x, then between B and C, the body covers what distance? Bhumika has given the correct answer. It will be h minus x. यहाँ x distance cover किया तो B to C में क्या होगा? h minus x. Parishmita also given the same answer. Now, if I can prove that at position A and at position B and at position C, the energy, total energy of the body remains the same, then I am proving what? Law of conservation of energy. Law of conservation of energy हम लोग को क्या समझाता है? Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. It can only be converted from one form to another. ठीक है? तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे अभी?
हम लोग ए में, बी में और सी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और ए में जितना एनर्जी आएगा बी में भी उतना ही आना चाहिए और सी में भी उतना ही आना चाहिए. टोटल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. Now just look at the solution, or we can say just look at the proof. So at position A, हम तीनों पोजीशन का अलग अलग करके कैलकुलेशन करके दिखाएगा आप लोगों को. तीनों पोजीशन में टोटल एनर्जी शुड रिमेन द सेम. एट पोजीशन ए, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, कोई आइडिया है आपको? एनी आइडिया डू यू हैव? At in this diagram, or from this diagram, if I ask you what is the potential energy at position A? Okay, Nabaruna has given the correct answer and it is mgh. Then if I ask you what is the kinetic energy at position A, then it will be formula, you know, half mv square. Velocity is 0, so kinetic energy is 0. Now, if I ask you what is the total mechanical energy, total mechanical energy क्या है at position A? Total mechanical energy, potential energy plus kinetic energy. Potential energy कितना है? mgh. Kinetic energy 0. So total mechanical energy will be what? mgh. So at position A, we got total mechanical energy कितना? mgh. अब हम लोग पोजीशन बी में देखते हैं. एट पोजीशन बी, at position B, if I ask you what is the potential energy, do you have any idea? At position B, what is the potential energy? Do you have any idea? Height कितना? Height is always measured from the ground. Height is always measured from ground. Ground से height देखना होगा B तक. M is the mass, G is the acceleration due to gravity, and height, B के लिए height क्या होगा? H minus X. H minus X. So it will be mgh minus mgx. Now kinetic energy. Sorry. Kinetic energy कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर. लेकिन हम लोग को तो वेलोसिटी पता नहीं. पोजीशन बी में, ए में हम लोग को पता था वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0. बी में वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना होगा फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ मोशन. We know that v square, we know that out of the 3 equations of motion, एक में टाइम नहीं है, that can be used. v square minus u square equals to 2as हम लोग जानते हैं. इसको a to b तक का मोशन के लिए अप्लाई करेंगे. a to b, तो v square minus u square equals to 2as. तो v square minus u will be 0 equals to 2g. Distance covered between a and b is x. Therefore v square equals to 2gx. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में हम लोग को क्या चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर. सो इंस्टेड ऑफ वी स्क्वायर वी कैन राइट व्हाट? 2gx. सो इफ यू लुक एट हियर, 2 गेट कैंसल्ड, mgx. अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. EP प्लस EK. तो EP कितना है? EP इज mgh माइनस mgx. एंड काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? mgx. काइनेटिक एनर्जी यू आर गेटिंग mgx. So mgx will be cancelled, minus mgx plus mgx. So the final answer is here mgh. So at position A, हम लोग को टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना मिला? mgh. एट पोजीशन B टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना मिला हम लोग को? mgh. अब हम लोग को C में भी प्रूव करना है. We have to prove at position C that total mechanical energy is mgh. अगर हम लोग वो प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, then
We are proving what? Law of conservation of energy for freely falling body. So position A or B, have you understood? A and B, have you understood? All of you, have you understood? ओके ये क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देगा हम और इसको बार बार देखना आप. Now at position C, I am going to discuss at position C. At position C. C is that position where body is just touching the ground. मतलब ground तक पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है. So at position C, अगर आपको मैं पूछूं potential energy कितना होगा, तो it will be mg and height is 0. Height is considered to be 0, so potential energy 0. अगर हम आपको पूछेगा kinetic energy कितना है, so it will be half m and v square. इस बार भी v square पता नहीं हम लोग को, 0 नहीं होगा, it is just going to touch the ground. So we will find out v square again. Why the equation v square minus u square equals to 2as. इस बार मोशन हम लोग लेंगे a to c. a में इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो a to c लेने में बेनिफिट होगा. So v square minus 0 square equals to 2. Acceleration हो जाएगा g and a to c total distance covered will be h. So v square will be 2gh. So half mv square, so it is 2gh. 2 get cancelled, so it is what? mgh. Okay. Now total mechanical energy. टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0. काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgh. So total energy will be what? mgh. Hence proved. Hence it is proved. What is proved? That at position A, at position B, and at position C, total energy remains constant. Total energy remains constant. Have you understood for position B and C? B और C में extra equation use करना पड़ा हम लोगों को. B and C में हम लोग को extra equations use करना पड़ा. V square minus U square equals to 2as. And for getting velocity at B, we have considered distance x. For getting velocity at C, we have considered distance covered as equals to h. Because A to C में distance है h और A to B में distance covered x. So we have proved the law of conservation of energy for this freely falling body. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये बॉडी नीचे गिर जाएगा तब तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, हाइट भी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0. तो इसका एनर्जी कहाँ चला गया? एनर्जी का तो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये एनर्जी कहाँ चला गया? नवरुणा बोल रही है एनर्जी ग्राउंड में चला गया. और कोई? एनी अदर आंसर? When this body falls down, its potential energy and kinetic energy will be converted into sound energy, heat energy. ये सब में कन्वर्ट हो जाएगा. कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरता तो साउंड होता है कि नहीं? दैट मीन्स उसका पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होगा. हीट इज ऑल्सो जनरेटेड. ये हीट एंड साउंड कहाँ डेसिपेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा? कहाँ पे? नेचर में. ओके. सो we are moving to the last topic of this chapter. We are moving to the last topic. Just wait. और ये लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ पेंडुलम.
एक पेंडुलम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे यूज होता है ये रूल? व्हाट इज पेंडुलम? अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एक पेंडुलम में क्या होता है? पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग and a metallic ball is suspended. A metallic ball is suspended using that string. This is a solid ball. ये metallic ball जो होगा वो ball solid ball होगा. This one. Do you know what term is used for this particular position of the metallic ball? When the metallic ball is at rest position, ये rest position में है. So what term is used for that? Do you have any idea? This position, O position, is called what? Mean or extreme position? Actually, it is called mean position. Extreme nahi hoga. This one is mean position. And this is also called position of equilibrium. Position of equilibrium. ठीक है? अब इस मेटालिक बॉब को हम लोग किसी हाइट में ले जाते हैं. अभी समझो इट इज जस्ट टचिंग द ग्राउंड. इट इज जस्ट टचिंग द ग्राउंड एंड वी आर टेकिंग दिस मेटालिक बॉब टू सर्टेन हाइट. हाइट में ले जाने के बाद इसमें एनर्जी आ जाएगी. कौन सा एनर्जी आएगा? अगर इस बॉब को हाइट में ले जाने से इसमें कौन सा एनर्जी आएगा? It will acquire which energy? It will acquire potential energy. Okay. So at this point, potential energy will be maximum. Potential energy will be maximum and kinetic energy will be zero because velocity is zero. फिर ये बॉब नीचे की तरफ आने लग जाएगा. यहां पहुंचने से हाइट जीरो हो जाएगा. हाइट जीरो होने से मिड पोजीशन में वापस पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो but speed will be maximum, so kinetic energy will be maximum. Kinetic energy will be maximum. Then this bob will move to the opposite side and again acquire the same height as previous. So यहाँ आने के बाद potential energy वापस हो जाएगा maximum and kinetic energy हो जाएगा zero. That means when this bob of the pendulum oscillates, its potential energy gets converted into kinetic and kinetic energy gets converted into potential energy. Matlab there is conversion of energy from one form to another. So it also obeys the law of conservation of energy. लेकिन आपने देखा होगा कि एक pendulum oscillate करने के बाद after some time it stops. So now again, if I ask you if it stops, what happens to the potential and kinetic energy? Do you have any answer? What happens to the potential and kinetic energy? Do you have any answer for that? What happens to the potential and kinetic energy? जब ये रुक जाएगा उसका potential and kinetic energy, potential energy और kinetic energy का क्या होगा? That potential energy and kinetic energy will be converted into good sound energy as well as heat energy, sound energy, etc. Have you understood? So from my side, general explanation of this chapter is over. Now your duty to read the material completely, textbook completely. Okay.